हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कंप्यूटर हिस्ट्री एंड इन्वेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अपना फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे अपन यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने कंप्यूटर अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे वो एग्जाम वाइज देखे। ये अपन कॉमन देख रहे हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन अपने को काम में आएंगे जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम अपन 20 to 25 वीडियोस बनाएंगे जो कंप्यूटर अवेयरनेस के रहेंगे, जहाँ पे अपन डे बाय डे एवरी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे उसके एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the first device to used for calculation? देखो कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट डिवाइस कौन सा यूज किया था। देखो एस्ट्रोलेब, एबेकस, पास्कलाइन एंड नेपियर बोर्ड। तो आंसर है यहाँ पे एबेकस। नेक्स्ट सेकंड, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन 1642? तो एलन टर्निंग, विलियम शिकर्ड, ब्लेज पास्कल एंड चार्लेस बैबेज। तो आंसर है यहाँ पे ब्लेज पास्कल। Next, third, which computing device was invented by Gottfried Wilhelm von Leibniz in 1671 and built in 1694? देखो ऑप्शन है एस्ट्रोलेब, डिफरेंस इंजन, लेबिज कैलकुलेटर एंड Z1। तो आंसर है लेबिज कैलकुलेटर। नेक्स्ट फोर्थ, which civilization invented the first known algorithm for solving number problems? तो देखो ऑप्शन है इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ग्रीक, रोमन्स। तो आंसर है बेबीलोनियंस। नेक्स्ट फिफ्थ, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन 1780? तो देखो ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलन टर्निंग, चार्लेस बैबेज। तो आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट सिक्स, which company introduced the first personal computer Apple II in 1977? तो देखो ऑप्शन है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एप्पल। नेक्स्ट सेवन, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट फोर फंक्शन कैलकुलेटर क्लॉक इन 1624? आंसर है विल्हेम शिकार्ड, ब्लेज पास्कल, एलन टर्निंग एंड चार्लेस बैबेज। तो आंसर है यहाँ पे विल्हेम शिकार्ड। Next, 8. What was the first high-speed printer developed by Remington Rand in 1953? तो देखो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट नाइन्थ, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 8-bit माइक्रोप्रोसेसर इन 1972? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंटेल। Next, 10th, which computing machine did Alan Turing define in 1936? तो देखो ऑप्शन है Z1 कैलकुलेटर, टर्निंग मशीन, डिफरेंस इंजन, पास्कलाइन। तो आंसर है यहाँ पे टर्निंग मशीन। नेक्स्ट 11th, which country company NEC developed the first electronic computer in 1958? तो देखो ऑप्शन है USA, जर्मनी, जापान, यूके। आंसर है यहाँ पे जापान। नेक्स्ट 12th, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1976 बाय पर्किन, एल्मर एंड गोल्ड सेल? तो देखो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सुपर मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट 13, which device was developed by William Burroughs in 1886? तो देखो ऑप्शन है टेलीफोन, कमर्शियल मैकेनिकल एडिंग मशीन, सॉर्टिंग मशीन एंड डिफरेंशियल एनालाइजर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कमर्शियल मैकेनिकल एडिंग मशीन। नेक्स्ट 14, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एबेकस? तो देखो ऑप्शन है नेविगेटिंग, सेकंड है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थर्ड है स्टोरिंग डेटा एंड फोर्थ है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट 15, हु बिल्ड द फर्स्ट बाइनरी कैलकुलेटर एट बेल्ट टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1937? तो देखो ऑप्शन है एलन टर्निंग, जॉर्ज स्टीबिट्स, ब्लेज पास्कल, चार्लेस बैबेज। तो आंसर है जॉर्ज स्टीबिट्स। नेक्स्ट 16,
Who invented first four function calculator clock in 1624? तो देखो ऑप्शन है ब्लेस पास्कल, विलियम शिकर्ट्स, एलन टर्निंग, जॉन नेपियर। तो आंसर है विलियम शिकर्ट्स। नेक्स्ट 17, what was the name of machine developed by Alan Turing in 1936? एनालिटिकल इंजन, टर्निंग मशीन, डिफरेंस इंजन, Z1 कैलकुलेटर। तो आंसर है यहाँ पे टर्निंग मशीन। नेक्स्ट 18, what major breakthrough was introduced in the fourth generation of computer? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट 19, द इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर? देखो ऑप्शन है 1964, 1971, 1981, 1995। तो करेक्ट आंसर है 1971। नेक्स्ट 20, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू यूज ट्रांजिस्टर फॉर प्रोसेसिंग, second to store data using magnetic core memory, third to develop AI based system capable of self learning, and fourth to enhance mechanical computing system। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, टू डेवलप AI based system capable of self learning। नेक्स्ट 21, what was the first computing device? तो देखो ऑप्शन है एस्ट्रोलेब, एबेकस, पैस्कलाइन, यूनिवैक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एबेकस। नेक्स्ट 22, who invented the first digital computer in 1642? तो देखो ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, ब्लेस पास्कल, गॉटफ्राइड विलियम्स वॉन लेबिस एंड एलन टर्नर। आंसर है यहाँ पे सेकंड ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट 23, which computing device was used for navigating in ancient time? तो देखो ऑप्शन है एबेकस, एस्ट्रोलेब, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एस्ट्रोलेब। नेक्स्ट 24, who improved upon Pascal computer by inventing a machine that could add and multiply? तो देखो ऑप्शन है ब्लेस पास्कल, गॉटफ्रेड विलियम्स वॉन लेविन्स, चार्ल्स बैबेज एंड एलन टर्निंग। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड गॉटफ्राइड विल्स लॉन वेबलिस। नेक्स्ट 25, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटिंग? तो फादर ऑफ कंप्यूटिंग सबको ही पता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेस पास्कल, एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज एंड जॉन नेपियर। तो आंसर है यहाँ पे चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट 26, व्हाट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट इन 1951? तो देखो ऑप्शन है ENIAC, यूनिवैक, IBM 604 एंड एप्पल। तो आंसर है यूनिवैक। नेक्स्ट 27, व्हाट रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो देखो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट 28, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी? तो देखो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट 29, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम यूजर्स इन 1981? तो देखो ऑप्शन है एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, हेवेट पैकेट्स। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड IBM। नेक्स्ट 30, द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएट विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? देखो ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो करेक्ट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट 31, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज लार्ज हार्ड ड्राइव, मल्टीपल CPU, हाई मेमोरी कैपेसिटी एंड इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग? तो देखो ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट 32, which type of computer is commonly used for scientific research and high processing power with multiple ALU and processors? देखो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, PDA। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट 33, a portable and compact version of personal computer used
यूजुअली इन नोटबुक शेप इज कॉल्ड एज। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, लैपटॉप, पीडीए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लैपटॉप। नेक्स्ट 34, which type of computer is very small, usually used device like camera and a microprocessor as its central processing unit। देखो ऑप्शन है मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। Next 35, a handheld computer that is known as a palm computer and can be used for email, internet access and multimedia is called। तो देखो ऑप्शन है लैपटॉप, पीडीए, मेन फ्रेम एंड सुपर। तो हैंडहेल्ड अगर है तो वो होता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। Next 36, which type of computer has the capability of processing equivalent to 14,000 microcomputer। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मेन फ्रेम, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन है यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग, नहीं। ऑक्यूपाई स्मॉल फिजिकल स्पेस, करेक्ट। हैव मल्टीपल प्रोसेसर, नो। यूज्ड इन डेटा सेंटर, नो। तो यहाँ पे सेकंड जो है सिर्फ वही है, ऑक्यूपाई स्मॉल फिजिकल स्पेस। नेक्स्ट 38, which of the following computing device is commonly used in industries for large scale data processing such as banking and government sector। देखो ऑप्शन है लैपटॉप, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, पीडीए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट 39, व्हाट फीचर मेक पीडीए डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन है दे हैव मल्टीपल सीपीयूज, उसके बाद दे आर लार्ज एंड रिक्वायर डेडिकेटेड स्पेस, थर्ड दे आर हैंड हेल्ड एंड ऑफन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ है दे यूज मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, दे आर हैंड हेल्ड एंड ऑफर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 40, which type of computer allows user to borrow the internet, send email, record video and play game while being compact and portable। देखो ऑप्शन है लैपटॉप, पीडीए, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पीडीए। नेक्स्ट 41, which type of computer calculate physical quantities and use continuous variable for computation। देखो ऑप्शन है अपने पास डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड एंड क्वांटम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, वोल्टेज मीटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वोल्टेज मीटर। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन है they use continuous physical variable, second is they use binary digital for processing, third they rely on mechanical computer for calculation, and fourth they appropriate calculation using gears। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, they use binary digit for processing। नेक्स्ट 44, which type of computer store data in the term of number and process in discrete steps। तो देखो ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन क्या है, दे यूज ओनली एनालॉग प्रोसेसिंग, सेकंड है दे कंबाइन फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड दे आर यूज ओनली फॉर सिंपल कैलकुलेशन, एंड फोर्थ दे आर rely slowly on mechanical movement for computing। The correct answer is second, they combine feature for both analog and digital computer। Next 46, in hybrid computer what role does digital component typically play। देखो ऑप्शन है यहाँ पे it serve as a solver of differential equation, second है it provide logical operations and control, third it perform all calculation using gear, and fourth है it replace the need for analog computing। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, it provide logical operation and control। नेक्स्ट 47, which type of computer can resolve differential equation using analog component,
while also performing logical operation with digital component। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट 48, अनलाइक डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर यूज। तो देखो ऑप्शन है डिस्क्रीट बाइनरी डिजिट, सेकंड है कंटिन्यूस फिजिकल वेरिएबल, थर्ड है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड फोर्थ है ऑन ऑफ स्विच। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंटिन्यूस फिजिकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिजिटल कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन क्या है, दे ऑपरेट इन कंटिन्यूस स्टेप, सेकंड है दे प्रोसेस डेटा यूजिंग बाइनरी डिजिट, थर्ड दे प्राइमरी यूज गियर फॉर कैलकुलेशन एंड फोर्थ दे डू नॉट स्टोर टेक्स्ट डिजिटली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, दे प्रोसेस डेटा यूजिंग बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन क्या है, यूज कंटिन्यूस वेरिएबल, सेकंड प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म, थर्ड परफॉर्म कंप्यूटेशन यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज एंड फोर्थ कैन बी यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन कंप्यूटर अवेयरनेस का, नेक्स्ट कंप्यूटर नहीं बैंकिंग अवेयर, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ेंगे, देन करंट बैंकिंग अवेयरनेस, देन जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी कंटिन्यू पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।